Hello dear students, today we will talk about new chapter that is polymers. This will be the first lecture of this chapter and we will begin this before talking about what polymers are. I must tell you, if you are new to my channel, please do not hesitate to subscribe it and share it as much as you can. And if you like my videos, press the bell icon to get the latest updates. Now, what basically polymers are? This will be the chapter for many classes like 11th, 12th, NEET. 11th is less suited for it. NEET JEE and BTech students. BTech chemistry course. And now, what polymers are? Polymers are actually high molecular mass molecules. So polymers are a high molecular weight of around 10 to power 3 to 10 to power 7 AMU molecule. Polymers are a high molecular weight molecules consisting of repeated structural units जिनको हम नाम देते हैं monomers, and these are called as polymers. So वो polymers वो molecules हुआ करते हैं जिनका molecular mass बहुत ज़्यादा है, of around 10 to power 3 to 10 to power 7 AMU, and they are basically consisting of repeated structural unit. उन units को हम नाम देते हैं monomers. So such a high molecular mass system is known as a polymer. For example, आपके पास एक ethene molecule है. This is called ethene. ethene जब polymerize होता है तो हमारे पास एक long chain polymer बनता है. ये इसका repeated unit है, तो we call it a polythene. This is a polymer, and this is actually its monomer, because this is the repeated structural unit. So polymers are basically high molecular substances which are consisting of repeated units, that's called as monomers. उनको हम नाम देते हैं polymers. हमारे पास और एक term है, that's called as macromolecule. So macromolecule क्या होता है? Macromolecule is basically a high molecular mass substances or molecules. High molecular mass substances जो है ये macromolecule होते हैं, but may not consist of repeated units, may not consist of monomers, may or may not consist of monomers. मतलब ये कि इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि polymers भी है, polymers are also high molecular mass substances, इस हिसाब से जो है they are actually called macromolecules, they are also called as macromolecules. लेकिन इनमें दूसरी कंडीशन क्या है? It must consist of a repeated structural unit, that's called as monomer. वो macromolecule में नहीं भी हो सकता है. So we can write the statement that all polymers are macromolecules. All polymers are macromolecules, but all macromolecules may not be polymers, because polymer में दो condition है. Condition number 1 is it's having a high molecular mass. Condition number 2 is it must contain a repeated unit, that's called monomer. Macromolecule में एक ही condition है that it must be a high molecular mass system. For example, हमारे पास एक compound है that's called as chlorophyll molecule. So chlorophyll एक plant में होता है, chlorophyll, which gives a green coloring matter to the leaves. So this is basically a macromolecule, a high molecular mass system, that's called a macromolecule. But it's not a polymer. क्यों? Because it is not consisting of a repeated unit. There is no repeated unit in case of chlorophyll molecule.
इन कंट्रास्ट अगर आप देखेंगे पॉलीथीन में, polythene is a high molecular mass system, so it's a macromolecule, and it also contains repeated unit. That's why it's called as polymer. So polythene जो है हाई मॉलिक्यूलर मास सिस्टम है ही, तो उस हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल बन गया. दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्या? इसका रिपीटेड यूनिट है मोनोमर, दैट्स ईथीन, तो दैट्स व्हाई दिस मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीमर. सो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स मे नॉट बी पॉलीमर्स. द रीजन इज if they do not contain repeated unit, they're called just macromolecules. If they do contain repeated unit, that is the monomer, we call it a polymer. I hope you understand it. Next, हमारे पास अगर मोनोमेरिक यूनिट होगा, if monomeric unit is same, belongs to same molecule, तो it's called as homopolymer. So we have homopolymer. So homopolymers वो वाले पॉलीमर्स होते हैं जिनमें मोनोमेरिक यूनिट बिलोंग करता है एक ही मॉलिक्यूल को. फॉर एग्जांपल हमारे पास ईथीन है, सो पॉलीमर बनेगा पॉलीथीन. सो एक ही मोनोमेरिक यूनिट है, दैट्स ईथीन, सो इट्स अ होमोपॉलीमर. सिमिलरली वी हैव पीवीसी, इट्स विनाइल क्लोराइड, इसमें आपका बनेगा this is called polyvinyl chloride, that's PVC. So this is having a same monomeric unit, that's why it's a homopolymer. Similarly आपके पास है vinyl cyanide, this is also called as acrylonitrile. We will be talking about all these in detail जब हम पढ़ेंगे addition and condensation polymers, तब हम इनका mechanism भी बताएंगे आपको hopefully. So ये जो है it belongs to, ये एक polymer बनेगा यहाँ, so it's called as orlon or acrylan, और we can say polyvinyl chloride, polyvinyl cyanide, तो या polyacrylonitrile भी इसको बोलते हैं. सेम मोनोमेरिक यूनिट है, n times, so we are having same molecules which act as monomeric units, they are called homopolymers. Now if monomeric unit belongs to different molecules, if monomeric unit belongs to different molecules, तब क्या होगा? Then there is called copolymers, then it's called as a copolymer. So copolymer में monomeric units different होते हैं. For example आपके पास है CH3 CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2, it's 1,3-butadiene that combines with acrylonitrile, or you can say vinyl cyanide. So it gets a polymer called Buna N. It gets a polymer called Buna N. Similarly अगर आपके पास 1,3-butadiene ही है, if you have 1,3-butadiene again, but instead of vinyl cyanide, if you have styrene, this is called as styrene, या vinyl benzene or styrene, we got a polymer that's called as Buna S. So if you see, this is the polymer but consisting of two different monomeric units, one vinyl cyanide, next is 1,3-butadiene. In the second category there's 1,3-butadiene and the vinyl benzene, or we can say styrene. So two different monomeric units are there, so we call it a copolymer. So Buna N and Buna S are basically called as copolymers. We will be talking about their mechanism also, hopefully, once we switch on to addition and condensation polymerization. So this was all about what are copolymers and what are homopolymers. Now we will switch on to classification of polymers. Classification. So classification number 1 is based on source. Based on source or origin of polymers. इसमें 3 categories हैं. Category number 1 is natural polymers.
नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं विच ऑकर नेचुरली इन नेचर, सो ऑकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। वो वाले पॉलीमर्स जो नेचुरली ऑकर करते हैं इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, वी कॉल देम नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन्स है, इनमें जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट्स अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द monomeric units of proteins. These proteins act as building blocks, of animals. हमारे पास है सेलुलोस एज ए नेचुरल पॉलीमर। इसका मोनोमर जो है दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। वाई एम टेलिंग यू द मोनोमेरिक यूनिट्स आल्सो, बिकॉज आपको ये याद रखना चाहिए नीट जेई में या बीटेक के ऑब्जेक्टिव्स में जो है आपको पूछा जाएगा कि सेलुलोस का मोनोमर क्या है, या प्रोटीन्स का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, या फिर स्टार्च का मोनोमेरिक यूनिट क्या है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या किसी भी पॉलीमर का मोनोमेरिक यूनिट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सो सेलुलोस का मोनोमेरिक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज है। इट्स अ मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल इन प्लांट्स। It's a main structural material in plants. कौन? It is basically this cellulose as a polymer, main structural material in plants. We have one more that is starch. Starch का जो है that is alpha D glucose. So beta D glucose was the monomer for cellulose. Alpha D glucose is the monomer for starch. It is the main reserve food of plants. Main reserve food in plants. Starch is actually main reserve food in plants. नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो तीन कैटेगरीज मैंने बोले, प्रोटीन्स, चाहे फिर सेलुलोज, चाहे स्टार्च, these are the biodegradable polymers. They are biodegradable polymers. बिकॉज ये डिग्रेड होते हैं खुद ही इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रबर, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज एक्चुअली 2-methyl-1,3-butadiene ऐसे। So it is actually 1,2,3,4 2-methyl-1,3-butadiene is called as isoprene, and इस isoprene का जो है ये मोनोमेरिक यूनिट है, होमोपॉलीमर। जब ये पॉलीमराइजेशन होता है तो एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है नेचुरल रबर। ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। सो दिस ऑकर्स एज लेटेक्स। ये कैसे ऑकर करता है प्लांट में? एज लेटेक्स। लेटेक्स इज बेसिकली द colloidal dispersion of rubber. It's actually colloidal dispersion of rubber in water. आप colloidal solution बनाएंगे रबर का in water, तो that's called as latex. ये बनता है latex as latex in the bark of tropical trees. ट्रॉपिकल ट्रीज के जो बार्क होते हैं उनमें नेचुरल रबर एग्जिस्ट करता है एज लेटेक्स, इन लेटेक्स फॉर्म। सो वहां से हम हासिल करते हैं इन नेचुरल पॉलीमर्स को, दैट इज नेचुरल रबर। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिन्स। सो रेजिन्स जो है दीज आर ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर्स। तो जो है ये दो जो है दे आर बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल polymers. So these are non-biodegradable polymers. Natural rubber and resins are the natural polymers.
but are non-biodegradable, while as proteins, cellulose, starch, these are the biodegradable polymers which also belong to natural category because they occur naturally in plant and animal life. Second हमारे पास है number 2, that is semisynthetic polymers. सेमीसिंथेटिक का माने ये है हम इनको ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं. कैसे? बाय मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स. हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. जो पॉलीमर बनता है इसका नाम है सेमीसिंथेटिक पॉलीमर. फॉर एग्जांपल आपके पास है सेलुलोज डेरिवेटिव्स, मतलब आपके पास सेलुलोज पॉलीमर है विच इज अ नेचुरल पॉलीमर, उसको आप डेरिवेटिव बनाएंगे तो उनको बोलते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव्स. फॉर एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट, आप एसिटाइलेशन करते हैं सेलुलोज को, वहां पे बनेगा पॉलीमर दैट्स कॉल्ड सेलुलोज एसीटेट. सो इट्स अ सेमीसिंथेटिक पॉलीमर. वी हैव सेलुलोज नाइट्रेट, आप नाइट्रेशन करते हैं सेलुलोज को, या फिर आप हमारे पास है सेलुलोज ज़ैंथेट. सो दीज आर सम ऑफ द semisynthetic polymers which are obtained by modifying natural polymers. हमने इस cellulose को modify करा to get its derivative, we call that cellulose derivatives. Examples are these. One more example हमारे पास है, that is vulcanized rubber. Vulcanized rubber मतलब आपके पास नेचुरल रबर है, उसके जो है आप उनको सिल्वर सल्फर लिंकेज डेवलप करेंगे तो वहां पे बनेगा वोल्कनाइज्ड रबर. दैट इज बेसिकली द मॉडिफाइड रबर. सो मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रबर को आपने किया, दैट बिकम सेमीसिंथेटिक. सो वोल्कनाइज्ड रबर इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीसिंथेटिक पॉलीमर्स. सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमीसिंथेटिक पॉलीमर्स. ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए फॉर नीट जेई एग्जामिनेशन. वहां पे जेई में और नीट में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि सेलुलोज एसीटेट सेमीसिंथेटिक है, नेचुरल है, या फिर जो है synthetic है. So number 3rd category is synthetic polymers. One more point I should add here is जो ये cellulose acetate है इनका नाम है rayon. They are also called as rayon. So number 3rd is synthetic polymers. Synthetic polymers. Synthetic polymers क्या होते हैं? Synthetic polymers सीधी बात है, हम इनको synthesize करते हैं लैब में. So they are synthesized in lab. Synthesized in lab, उनको हम नाम बोलते हैं synthetic polymers. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीथीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन, या फिर हमारे पास है ऑर्लॉन, हमारे पास है ऑर्लॉन, या फिर हमारे पास है नाइलॉन 66 या नाइलॉन 6 या नाइलॉन 610, या फिर आपके पास है बेकेलाइट, या फिर आपके बेकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, या मेलामाइन इट इज बेसिकली मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. तो ये सारे के सारे जो है आपके, या पॉलीप्रोपाइलीन भी है, ये सारे सिंथेसाइज हम करते हैं लैब में, तो वी कॉल देम सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो वाली पॉलीमर्स हुआ करते हैं जो हम डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लैब में. दे आर कॉल्ड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड पॉलीमर्स. या हमारे पास है बूना एन, जो हमने बात की थी उससे पहले ही, या बूना एस. दे आर ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस पॉलीमर्स लेटर ऑन. फिलहाल आप इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. दीज आर बेसिकली, दिस इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स एज फार एज the source or origin is concerned, which includes natural polymers, semisynthetic polymers, and that of synthetic polymers. In the next video, hopefully, I shall be taking up classification based on structure. Then we'll switch on to some other classifications based on synthesis, etc. This will go on. If you like these videos,
Please do not hesitate to subscribe it and share as much as you can. Press the bell icon also to get the latest updates. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.